Assalamu alaikum, my dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to discuss a poem, and this poem is actually written by W.B. Yeats, and the poem is addressed to his beloved Morgan, or I can say this poem is dedicated to his beloved Morgan. And in this poem, we will understand or we can understand actually the intensity of poets' pure love towards Morgan. But Morgan was repeatedly responding negatively to his love. She was not accepting his proposal, and in this poem he expresses his love. Actually वो कमांड देता है मॉडगॉन को कि फ्यूचर में जब आप बूढ़ी हो जाओगी, when you will be old, read my poetry, then you will realize that uh, how much intensity was there in my love, and I was not in love with your external beauty. I was in love with your pure heart, with your pure soul. So little bit of know-how about the author is written over here, but one thing I will add to your knowledge that the poet is known as the pioneer of modern poetry. That means, what do you mean by pioneer? Pioneer means a person who starts with something new. Actually, in traditional form of poetry, there was strict rules and regulations about the rhyme scheme. यानी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री में हमेशा हमें कोई ना कोई राइम स्कीम नज़र आती है, लेकिन मॉडर्न पोइट्री इज़ फुल ऑफ फ्री वर्सेस. अगर आप पोइम्स देखोगे, आजकल की जो पोइम्स है वो फ्री वर्ड्स में लिखी जाती है. देयर इज़ नो कंपल्शन टू फॉलो दिस और दैट राइम स्कीम. ओके, now a few things about the Morgan which you should know. Actually Morgan जो है वो एक तो she was an actress plus she was an Irish revolutionary. तो revolutionary थी वो, उसने एक revolution लाया. ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है? चेंज लाना इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, इन अ स्टेट, राइट. कहीं पर भी जब एक इंसान चेंज लाता है उसको हम रेवोल्यूशनर कहते हैं. ओके, सॉरी. सो लेट्स मूव टू द first stanza of the poem, and there are 4 verses of this line. When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows steep. So this is the first stanza of the poem, and it's written in ABBA. So it's the first stanza of the poem, and it comprises of 4 verses or 4 lines. Okay, full of sleep. What do you mean by full of sleep? Full of sleep means approaching to the death, or you can say approaching to the. So
what do you mean by full of sleep? Full of sleep means approaching full of sleep means approaching death. This is the first difficult phrase you can say over here. And the next one is nodding by the fire. Here, nodding by the fire means feeling sleepy or drowsy before the fire. Before the fire. Okay? So, when you are old and grey and full of sleep, तो यहाँ पर अभी जो पोइट है और पोइट की बिलाउड है दोनों यंग है, यूथफुल डेज अपने एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि जब एक इंसान बढ़ता है, मैच्योर होता है, उसके साथ जो उसकी ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन विद द एज वो मैच्योर होता है. ठीक है, तो पोइट कहते हैं एक कमांड देता है किसको, अपनी बिलाउड को, फ्यूचर कमांड, कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी और आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आप अप्रोच कर रही होगी किसको, टुवर्ड्स द डेथ, राइट, और आप बैठना कहाँ पर, फायर प्लेस के सामने. ठीक है, और वहाँ पर आप ये किताब लेना अपनी हाथ में. कौन सी किताब? पोइट ने क्या किया होता है, पोइट ने एक फुल बुक लिखी होती है पोइम्स की. 22 पोइम्स हैं उस बुक में, और उस किताब का नाम क्या है, द रोज़. उसमें जो 22 पोइम्स हैं वो सारे एड्रेस किए गए हैं मॉड गॉन को. वो अपना जो ट्रू लव है वो एक्सप्रेस कर रहा है इन पोइम्स के ज़रिए. ठीक है, और फिर पोइट कहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी और आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी तो आप फायर प्लेस के सामने बैठ के, क्योंकि आप व्हेन यू आर ओल्ड ना, आप उतनी हिम्मत इंसान में नहीं होती है, राइट, तो आप ये किताब अपने हाथ में लेना, आहिस्ता से पढ़ना, और आप रियलाइज़ करना जब आप अपने यंग यूथफुल डेज एंजॉय कर रहे थे, आपकी आँखों में क्या था, आपके वो जो नरम नरम निगाहें थी, अपनी परछाई थी, वो सब आप याद करना. ठीक है, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह कल हम बाकी स्टेंजा, पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.